The Epistle to the Hebrews. Introduction to Hebrews. And in early manuscript the title is To the Hebrews. पुराना किताबों में इनका टाइटल, ये किताब का, ये पत्री का टाइटल ऐसा था, टू द Hebrews. To the Hebrews. The Epistle to the Hebrews stands as one of the most profound and theologically rich writing in the New Testament. बहुत गहराई से बातें लिखा है इब्रानियों का पत्री में, और it bridges the old and new covenants, presenting us Jesus Christ as the ultimate revelation of God. पुराना वाचा और नया वाचा और पुराना नियम और नया नियम को जोड़ते हुए इस सारी चीज़ों का फुलफिलमेंट हुआ यीशु मसीह में करके बोलते हुए पूरा का पूरा पत्री हम दे सकता है. समझ आया? So the main content is Jesus Christ himself, or the main content is Jesus Christ, Lord and Savior Jesus Christ. अर्ज भी करा था ना. So the main content is Jesus Christ. He is the ultimate revelation of God, and the key word which you will find in this letter is better. जीसस इज बेटर देन, या जीसस इज बेटर देन करके बहुत जगह पर आप लोग इस पत्री में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, that you will find mostly in the chapter 11 by faith and all. So to speak about the authorship, nobody knows who is the author of this book or this letter. किसी को पता नहीं है इस पत्री का लेखक कौन है, लेकिन ये पत्री का लेखक लिखने किसके लिए लिखा उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता था. The one who wrote this letter, he knows the audience very well. He knows the audience very well, and he wants to see them again. Read chapter 13 verse 19. चैप्टर 13 का 19 पढ़ के देखना. लेखक कौन है पता नहीं, लेकिन जो लिखा उन्होंने ये लोगों को पहले एक बार मिला था, फिर भी मिलना चाहता था. 19. I urge you the more earnestly to do this in order that I may be restored to you the sooner. चैप्टर 13 वर्स 19. हिंदी में पढ़िए गोपाल. I urge you to more earnestly to do this in order that I may be restored to you the sooner. मैं जल्दी वापस तुम लोगों को मिलने के लिए आना चाहता हूँ करके एक हिंट तो दिया, लेकिन we don't know who is the author. But according to scholars, they said there are 4 authors name comes when we speak about the author of Hebrews. First one अपोस्टल पॉल, पहला जो है प्रेरित पौलुस का नाम आता है. दूसरा आता है बरनबास का नाम आता है. Regarding Barnabas, it was suggested by church father Tertullian. टेर्टुलियन करके चर्च फादर था, उन्होंने सजेस्ट किया बरनबास ने लिखा करके. मार्टिन लूथर सेड अपोलोस ने लिखा. आई थिंक यू नो अबाउट मार्टिन लूथर. मार्टिन लूथर सेड इट वाज रिटन बाय अपोलोस. क्लेमेंट ऑफ रोम, he said it was written by Luke. Regarding the date, it was written between AD 60 and 70. AD 60 और 70 का बीच में लिखा गया था. AD 60 और 70 का बीच में लिखा गया था. It was written between AD 60 and 70, before the destruction of Jerusalem temple. जेरूशलेम टेम्पल का पतन की पहले ही लिखा गया था. AD 60 and 70.
audience. Audience were mostly the community of Jewish Christians who are very familiar with Old Testament. At the same time, the community also including the they were even Gentile Christians were also there. So the community, the audience were mainly Jewish community, also Gentiles, those who converted to Jewish community or Judaism. So audience were Jewish community mainly, and those Greeks or those Gentiles, those who converted to Judaism. जो यूनानी लोग यहूदी धर्म को अपनाया था, स्वीकार किया था, वो लोग भी थे. पर्पस ऑफ राइटिंग, पॉइंट नंबर 1. वहाँ ब्लैक कलर में दिया गया है. पर्पस ऑफ राइटिंग टू एनकरेज परसिवरेंस इन फेथ, विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, जीने के लिए प्रोत्साहन देना था. टू एनकरेज परसिवरेंस इन फेथ, विश्वास में दृढ़ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन देना था. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, टू टीच अबाउट सुपीरियरिटी ऑफ क्राइस्ट, महान, सर्वव्यापी और सबसे बढ़कर, सबसे उत्तम यीशु मसीह ही है करके बोलने के लिए लिखा. In the context where most people, even at that time, they were saying, they were speaking and they were becoming, they were speaking proudly about their forefathers, Abraham, Moses, Noah, Isaac, and they were thinking they have better background, they have a great background when they speak about Judaism. In the midst of that, in that context, the author is speaking above everything. The superior one is Lord Jesus Christ. Better we God, that is Lord Jesus Christ. There is point number 2 in purpose. लिखा पॉइंट नंबर 1 and point number 2. Done. Again the same topic, it is repeatedly we can see here. Sound doctrine, to instruct the believers to follow true gospel, to instruct them to follow true gospel. लिखने के लिए बोला. To instruct the believers to follow true gospel, सच्चा सुसमाचार को पालन करने के लिए अगुवाई दे रहा था. To teach about brotherly love. To teach about brotherly love. Point number 3 बोला मैंने. number 4. Point number 5, to teach about faith. Read chapter 11 verse 40, the main message of this letter. Read chapter 11 verse 40 and underline it and write it in your notes also. Since God has provided something better for us, that apart from us they should not be made perfect.
In chapter 12, taking all the names of all their forefathers, starting from Abraham, Abel. In the end part, he says, the author says, better than everything, God gave us something, that is Lord Jesus Christ. Without Him, we can't even live, or without, apart from us, they should not be made perfect. That is the main message of this episode. Jesus Christ, better than everything, the perfect one. Themes, point number 1. Themes, point number 1. The superiority of Christ. यीशु मसीह का श्रेष्ठता, स्वर्गदूतों से बढ़कर, मूसा से बढ़कर, सारी पुरोहित से बढ़कर. सुपीरियरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का श्रेष्ठता. थीम्स. Point number 2. The new covenant, नया वाचा. The blood of Christ, chapter 9 verse 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15. नया वाचा, the blood of Christ. Point number 3, faith, chapter 12. Point number 3, faith. Point number 4, the role of suffering. मसीह जीवन में सफरिंग का इंपॉर्टेंस या पात्रता क्या है, विशेषता क्या है, इसके बारे में समझाया. Then Christology, CHRISTOLOGY, Christology. It also speaks about salvation, soteriology. उद्धार के बारे में भी बात करता है, soteriology, salvation. Soteriology. हाँ? तीन में ही है. It also speaks about community, which means church, ecclesiology. Ecclesiology. It also speaks about something that is going to happen in the future, eschatology. भविष्य में होने वाला कुछ चीजों के बारे में बात करता है, वो है eschatology. So ये जो पत्री है, बहुत सारा बातें पुराने नियम से लिखा है. For example, if you read chapter 12, you will see almost all the historical names which you will find in Old Testament. पुराने नियम में जितना पुरोहित लोगों का या बाप दादाओं का नाम हम पढ़ता है, सबका नाम कहाँ आया है अध्याय, which means the author was very a scholar in Old Testament writing. पुराना नियम का बातों पर बहुत बुद्धिशाली था, ज्ञान था ये लेखक को. सो लेखक कितना लोगों का नाम मैंने बोला, इनमें से कोई लिखा होगा. आउटलाइन. Point number 1, Jesus is superior to angelic beings. Chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 18. Jesus is superior to Mosaic law. Chapter 3 verse 1 to 10 verse 18. Call to faith and endurance. Chapter 10 verse 19 to 12 verse 29. Concluding encouragements and remarks. Chapter 13 verse 1 to 25. Very short outline.